इनका इनका ले लो ना पेन ड्राइव या कोई डिवाइस से इनका जो प्रोजेक्ट है, ठीक है। ओके स्टार्ट स्ट्रीम वन स्टार्ट। सबको मिनिमाइज करो, फिर बैकग्राउंड। हाँ ये स्ट्रीम हो रहा है, ठीक है। अब क्या देना है, फोटो देना है, सारा कुछ आ इसका जो यूट्यूब का है ना उसको खोलो, लिंक खोलो तो अपने फ़ोन पे खोलो, इसको छोड़ो ना, फ़ोन पे जो हो रहा है तो ओपन करो, ओपन करो फ़ोन पे जो हो रहा है, कहाँ रखा हुआ है वो डाउनलोड्स में ना, ये है, ये प्रेजेंटेशन है ना, देखो खोलो अपना वो यूट्यूब खोलो, देखो ये पूरा स्क्रीन आ रहा होगा अभी, आ रहा है, लिंक से जिनका जिनका प्रेजेंटेशन नहीं हो वो लोग देखो ये शेयर होना है, आ गया ना, देखो आया ना, जिनका जिनका प्रेजेंटेशन नहीं है और वो लोग रूम में है, ये पूरा स्क्रीन तुम्हारा आ गया यूट्यूब पे, तुम आ गया। और सर वो अगर कैमरा कर देते तो कैमरा भी साइड में आ जाता कैमरा मतलब ये फोटो जो स्पीकर है उसका फोटो है, है। ठीक है ना, ये प्रेजेंटेशन आ गया, आप जो बोलते जाएगा उसका कैमरा इसको वहाँ लगा दो, ठीक है, ताकि स्पीकर आवाज़ इसका जो है ले ले डायरेक्ट, और जिसका उसको खाली कैमरा देना ले लेगा पेन ड्राइव से, ठीक है। कैमरा इनको सही है, कैमरा अगर ऑन करना है सर इसका थोड़ा छोटा कर दिया ताकि ये ज़्यादा रिएक्शन इसको वहाँ लगाओ सेटअप, कैमरा जहाँ पे जो स्पीकर यहाँ पे वो तो स्ट्रीम भी क्या स्टेटस नहीं चल रहा है, यूट्यूब चैनल में क्या स्टेटस अगर सर एक काम करते गूगल मीट से बहुत आसानी से हो जाता है। क्या ये जो वीडियो कैप्चर डिवाइसेस पे नहीं आ रहा, गूगल मीट पे बैठने से दोनों से जा जाता है, उसको प्रेजेंट कर दीजिए, आपका कैमरा भी आ आ रहा है यूट्यूब पे,
कहाँ पे प्रेजेंटेशन आपका हो गया प्रेजेंटेशन सेंड करना PowerPoint presentation. फाइल कहाँ File. File. नहीं आया अभी तक ये तो यही काम हम बोले थे इसलिए कि 10:30 बजे आके करवा लेना सब लोगों को यही बात बोले थे हम समझना नहीं है एक ही चीज को इसलिए हम 10:30 बजे ही नहीं है भाई जो चीज बोला हुआ है पूरी पास में रखे थे पास में जब नहीं नहीं हो रहा है अरे उसके लिए नहीं उसका प्रेजेंटेशन में पिछला बार भी इसके साथ यही हुआ कोई बात नहीं घबराने का दिक्कत नहीं है तो कहाँ क्या है हम किसी को कुछ बोल रहे हैं मेरा
Yes. ये रहा सर सारा प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन क्या लिखते हैं? हो गया? चलो एक आदमी यही रहा जिसको जाना हो ठीक है। नहीं इसको ग्रुप वाइज होगा ना। क्या होगा स्क्रीन शेयरिंग? अच्छा यहाँ से पहले जाना होगा एंटायर स्क्रीन। ये नहीं होगा ये कैमरा ऑन है ना तो फिर इसका ये ऑन नहीं होगा ना। जरूरत नहीं है लाइव। यहाँ पे आ जाएगा ये पूरा स्क्रीन आपका यहाँ से इंटीग्रेटो में इसको वापस लॉगिन करना। लॉगआउट कर दीजिएगा। नहीं इंटीग्रेटो में लॉग आउट हो जाता है। सब हो रहा है ठीक है जो स्क्रीन पे करो वो स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ये वाला जो कैमरा है ना ये उसे लेक्चर देखते हैं वैसे यहाँ पे छोटा ठीक है शट जाइए ये सब स्टार्ट करते हैं। शट करें। ये प्रेजेंटेशन का है मेरा फाइल का है। पीछे वाला नहीं लाइव तो वहीं का है क्या दिक्कत है? लाइव डैशबोर्ड में लाइव डैशबोर्ड में क्या ये तुम आप नहीं देखना चाहते चलो अब आपको लाइव तो लाइव प्रेजेंटेशन ओपन कीजिए और प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। Good morning, everybody. I hope you have prepared well for the presentation. First of all, what is the unique thing for this presentation is YouTube Live. You must have seen. So I welcome group number 2, Vikram, Anket Ranjan, Ashutosh Kumar, Abhishek Raj for the presentation. And secondly, I welcome all the professor also. Sorry for the delay. Today was the first day, that's why it took time for the
arrangement. And first of all, a round of applause for all the faculties present over here. They have given their precious time, so thank you all. And sir, please give the marks. So group number 2 and subsequent group number 3, group number 4, and group number 5, group number 6. Subsequent, they will come and give the presentation. So I have explained the marking scheme to the respected faculties, and I have explained the marking scheme to the students also. So give your presentation. Best of luck. Respected teachers, my friends, have a warm and pleasant morning to all of you. Myself, Vikram Kumar, with my group, standing before you to presentation on topic real-time application of consolidation. Our content are as follows. In first, we discuss about definition and stages of consolidation. After that, a spring analogy. Then after, consolidation and settlement. After that, consolidation and building construction. And at last, I discuss about over consolidated soil and normally consolidated soil. First, definition and stages of soil consolidation. Definition: the term consolidation describes the process by which soil mass decreases in volume, response to either natural or man-made loading. The meaning of consolidation has been used generally by soil and geotechnical engineers. Now, stages of consolidation. There are basically 3 stages of consolidation. First, initial stage of consolidation. Generally, soil is partially saturated. In the beginning, I am telling that generally soil is partially saturated. So when load is applied suddenly, there is immediate settlement or initial compression occur. This is called initial consolidation. This occur due to expulsion of pure air. Air present in soil pore is called pure air. Now I want to carry forward my presentation to my colleagues Ankit Ranjan to discuss about primary consolidation and secondary consolidation. Thanks. Good morning, everyone. As my friend said about initial consolidation, as we know, there is expulsion of air in soil. Then it's compact. It is also called compaction. This process, initial consolidation, is also known as compaction. Now we carry forward for primary consolidation. In primary consolidation, after initial compression, soil assumed to be fully saturated. Means when the soil is fully saturated, then its degree of saturation is 1 and the entire load is applied, taken by the water. Since water is incompressible, water comes out gradually and transfer the load to the soil. During the process, volume decreases, which referred as primary consolidation. This process will completed when water stops coming out. Now, secondary consolidation, if water comes out but still volume is decreasing, then this happens due to plastic rearrangement of solid particles. This phenomenon is referred as a secondary consolidation. Greater the plasticity of soil, greater will be the secondary consolidation. Now, as our topic is
real application of real time application of consolidation, then if something real would not happen, then it is not satisfactory. Then I would like to view something. As I already said, that after expulsion of air, the degree of saturation of the soil is 1. As we know, here the degree of saturation is 1 when the pressure is applied over it. When we apply pressure in the soil, it is sample of the soil. When we apply pressure over it, sorry, when we applied pressure over it, then the water comes out gradually. It is time taken process. So as we can see, water is coming out. Yes. So it is a time taken process. Water is coming out. Due to application of load, water comes out. This is called initial primary consolidation. As time passes, then arrangement of solid particles takes place. Means arrangement of solid particles comes into picture. Now assume that all the waters which is filled in this void are gone out. Then it is only a soil with solid. Now we apply load, then it suppress out or press out due to plastic rearrangement of the solid particle. Due to plastic rearrangement of solid particle, it suppress and it consolidate, and here all the as the water passes, the load is transferred to the solid of the soil. And now it's all for me. Now I will carry forward to Astos, who will discuss a spring analogy. Thank you. Good morning, everyone. Now I will continue from the spring analogy. The process of consolidation is often explained with an idealized system composed of a spring, a container with a hole in its cover, and water. In this system, the spring represents the compressibility or the structure of the soil itself, and the water which fills the container represents the poured water in the soil. The container is completely filled with water and the hole is closed. That means fully saturated soil. A load is applied onto the cover while the hole is still unopened. At this stage, only the water resists the applied load. That means development of excess pore water pressure. As soon as the hole is opened, water starts to drain out through the hole and the springs shorten. That means drainage of excess pore water pressure. After some time, the drainage of water no longer occurs. Now the spring alone resists the applied load. That means full dissipation of excess pore water pressure. End of consolidation. Now I would like to call my friend Abhishek. Good morning, everyone. Myself Abhishek, and I introduce consolidation and settlement. Settlement is a result of consolidation. It can be defined as amount that a structure will shrink inside after construction. Settlement can be either immediate primary consolidation settlement or secondary consolidation settlement. And we represent on the left side on presentation that the settlement, how settlement occurs. Now, total settlement is more in fine-grained soil as compared to coarse-grained soil due to greater volume of void. In figure, we represent that. Settlement rate is more in coarse-grained soil as compared to fine-grained soil due to great permeability. Now, next topic, consolidation in building construction. The structure constructed over coarse-grained soil shows less or negligible settlement, as most of the settlement will occur during construction because of greater settlement rate.
The structure constructed over fine-grained soil shows greater settlement because it has very less permeability. So during construction, entire water does not come out. Next, over-consolidated soil and normally consolidated soil. If the present applied load is less the maximum applied load in the past, then the soil is referred as over-consolidated soil. Over-consolidated soil showing less volume changes, swelling and shrinkage. Next, normally consolidated soil. A clay soil is said to be normally consolidated if the effective overburden pressure that is currently experiencing is the maximum it has ever experienced in its history. Next, and thanks to my all friends and my teachers for watching and giving me precious time. Thank you, sir. सर कॉम्पैक्शन में क्या होता है कि एक्सपल्सन ऑफ एयर होता है इमीडिएट, जो जैसे कि क्या है कि उसमें उसका डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता नहीं है, पार्शियली सेचुरेटेड होता है। तो जब पार्शियली सेचुरेटेड होता है तो उस पर लोड लगता है तो सबसे पहले उसमें से एयर निकल जाता है तो वो फुली सेचुरेटेड होता है। और कंसोलिडेशन में क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ वाटर होता है। जब लोड लगाया जाता है तो ग्रेजुअली वाटर अपने धीरे धीरे निकल जाता है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। सर सेकेंडरी कंसोलिडेशन है जो जब पूरा सॉइल जो है फुली वाटर निकल जाता है सॉइल से, तो उसके बाद जो सॉइल का रीअरेंजमेंट होता है उसका प्लास्टिक प्रॉपर्टी के कारण, तो रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल के कारण सॉइल का कुछ डिफॉर्मेशन होता है लोड अप्लाइड करने के बाद, उस डिफॉर्मेशन को बोलते हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन। और वाटर प्रेशर नहीं है सर। सॉरी सर। Thank you, sir. Group number group 3. One eight one five zero. Yes, sir. Yes, sir. 18150. Yes, sir. Yes, sir. Why? 18150. Group number 3. Good morning, our respected teachers and my dear colleagues. My name is Saul Kumar, and I'm going to be presenting my PPT presentation. And my PPT presentation topic is site exploration. And the content is what is the definition of site exploration. Second one is what is types of site exploration, methods of site exploration, and explain any one method. So first of all जानते हैं साइट एक्सप्लोरेशन क्या होता है। बोल रहा है एम और ऑब्जेक्ट ऑफ साइट एक्सप्लोरेशन इज टू प्रोवाइड द क्लियर एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉइल, their different strata and water table condition. It involves simple and lab testing. तो साइट एक्सप्लोरेशन कहने का मतलब हो रहा है कि मुझे कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है
तो मैंने उस कंस्ट्रक्शन वर्क पे गया, या कभी इन फ्यूचर होने वाला है तो मैं उस कंस्ट्रक्शन वर्क पे जाऊंगा, वहां पे मुझे सॉइल को लेना है। सॉइल को लेकर के मुझे उसका सर्वे करना है। सर्वे कहने का मतलब हुआ कि मुझे उसका जियोलॉजिकल सर्वे करना है, ना कि जियोमेट्रिक्स करना है। मुझे उसका जियोलॉजिकल सर्वे करना है। सॉइल का मैंने जियोलॉजिकल सर्वे किया, उसके बाद फिर मैं उसको लाऊंगा, अब उसको फिर मैं सैंपलिंग करूंगा। यहाँ पे सैंपलिंग कहने का मतलब हुआ कि मैं सॉइल को मैं कलेक्ट करके उसको फिर मैं अपने लेबोरेटरी में लाऊंगा। लेबोरेटरी में लाने के बाद फिर उसके डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है मैं उसको चेक करूंगा, लाइक इंडेक्स प्रॉपर्टीज जितने भी होते हैं मैं उसको चेक करूंगा। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि सॉइल के अंदर क्या क्या चीज की कमी है, क्या इसके बेनिफिट है, ये सब चीज मैं बताऊंगा। तो साइट एक्सप्लोरेशन यही हुआ। उसके बाद करा देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइट एक्सप्लोरेशन। फर्स्ट वन इज जनरल एक्सप्लोरेशन एंड सेकंड वन इज डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन। तो अब जनरल एक्सप्लोरेशन के बारे में जानते हैं क्या होता है। होता आफ्टर द सैंपलिंग सैंपल्स आर टेकन टू द लेबोरेटरी एंड डिफरेंट इंडेक्स प्रॉपर्टीज आर एस्टिमेटेड, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर अ स्मॉल कंस्ट्रक्शन वर्क। इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर मुझे कोई भी स्मॉल कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, जैसे कोई भी लाइट मुझे बिल्डिंग बनानी है, कोई भी स्मॉल कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, तो मुझे उसमें जनरल एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा। मैं उस सॉइल को जाऊंगा, सैंपलिंग करूंगा, उसके बाद फिर मैं उसको लेबोरेटरी में लाऊंगा। लेबोरेटरी में लाने के बाद उसमें इंडेक्स प्रॉपर्टीज लाइक वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, ये सब मैं उसका सॉइल का देखूंगा। उसके बाद मैं डिसाइड कर लूंगा कि हाँ ये सॉइल मेरे लिए यहाँ पे अब मैं कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ या नहीं भी कर सकता हूँ। Next one is detailed exploration. Detailed exploration is required when heavy, costly, important structure is required to be constructed. In this method, permeability, compressibility, shear strength, stability, bearing capacity, and all other important engineering properties are estimated in the laboratory after sampling process. अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि जनरल एक्सप्लोरेशन क्या होता है। तो जनरल एक्सप्लोरेशन वो होता है जहाँ पे हम लोग लाइट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे। और कभी भी मुझे अगर बहुत बड़े स्ट्रक्चर की बात करनी होगी तो हम लोग उसके लिए डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन करते हैं। और डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन में वही प्रोसेस है, हम लोग सॉइल को लाएंगे, सैंपलिंग करेंगे और उसके फिर लेबोरेटरी में ले जाएंगे। तो लेबोरेटरी में ले जाने के बाद हम लोग वहां पे इसका ये सब टेस्ट नहीं करेंगे, इंडेक्स प्रॉपर्टीज नहीं करेंगे, हम लोग बड़ा बड़ा टेस्ट करेंगे। जैसे आपका हो गया परमिएबिलिटी चेक करेंगे, उसके उस सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी कितनी है ये चेक करेंगे, शियर स्ट्रेंथ चेक करेंगे, स्टेबिलिटी उसकी चेक करेंगे, बियरिंग कैपेसिटी, वो सॉइल कंप्रेसिबल है या इनकंप्रेसिबल है ये चेक करेंगे, सॉइल में कोहेजन कितना हो रहा है ये चेक करेंगे, कंसोलिडेशन चेक करेंगे, कॉम्पैक्शन, देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज, ये सब उसमें चेक करेंगे। अब आता है मेथड ऑफ साइट एक्सप्लोरेशन का। तो फर्स्ट वन इज ओपन एक्सकेवेशन, सेकेंड वन इज बोरिंग जिसको कि हम लोग ड्रिलिंग भी बोलते हैं, थर्ड वन इज सब सरफेस साउंडिंग्स एंड फोर्थ वन इज जियोफिजिकल मेथड्स। ओपन एक्सकेवेशन के बारे में आता है। ओपन एक्सकेवेशन क्या होता है? बोलता है पिट एंड ट्रेंचेस आर प्रिपेयर्ड। कहने का मतलब है कि कह रहा है कि यहाँ पे मुझे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा। पिट का मतलब होता है गड्ढा, हमको यहाँ पे ये एक्सकेवेशन करने के लिए हमको एक बहुत ही गड्ढा खोदना पड़ेगा। और ये जो होता है ये मेथड, ये हर एक सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट, हर एक सॉइल के लिए कर सकते हैं। और हाँ, ये जो होता है ओपन एक्सकेवेशन, ये मैनुअली भी हो सकता है और मशीनरी भी हो सकता है। मैनुअली हम लोग तब करेंगे जब मुझे शैलो डेप्थ के लिए यूज करना है, और मशीनरी हम तब करेंगे जब मेरा डेप्थ जो है वो ग्रेटर देन 6 मीटर रहेगा, तो हम उसको मशीन से करेंगे। और एक चीज को हमको साफ ध्यान रखना है कि ग्राउंड वाटर टेबल जो होना चाहिए वो मेरा लो होना चाहिए। अब आते हैं बोरिंग्स के बारे में। बोरिंग्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरिंग होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑगर बोरिंग, सेकेंड वन इज ऑगर एंड सेल बोरिंग, थर्ड वन इज वॉश बोरिंग एंड फोर्थ वन इज रोटरी बोरिंग। आइए जानते हैं ऑगर बोरिंग क्या होता है। बोलता है यूज्ड फॉर सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल। सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल कहने का मतलब है कि हम लोग इसको ओनली एंड ओनली क्लेई सॉइल के लिए यूज करेंगे, हम लोग इसको स्टीप सॉइल के लिए यूज नहीं कर सकते हैं ऑगर बोरिंग को। फिर बोल रहा है मे बी मैनुअली और मशीनरी ऑपरेटेड, यानी ये आप भी कर सकते हैं या मशीन से भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। फॉर ग्रेवल्स इट कैन आल्सो बी, हम लोग इसको ग्रेवल्स में भी यूज कर सकते हैं। और इसमें जो होते हैं सिलिंड्रिकल और हेलिकल ड्रिल्स इसमें यूज होते हैं। नेक्स्ट वन इज अवर ऑगर एंड सेल बोरिंग। ऑगर जो होता है वो तो मेरा सॉफ्ट सॉइल के लिए यूज होता है, लेकिन सेल जो इसमें आ गए वो मेरे स्टीप सॉइल के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आइए हम आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप के थ्रू बताना चाहते हैं कि ऑगर बोरिंग कैसे वर्क करता है। तो आप इसको देखिए।
तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि इसमें सिलिंड्रिकल हेलिकल ड्रिल्स होते हैं, यूज होते हैं। अभी आपने देखा भी होगा कि इसमें सिलिंड्रिकल और हेलिकल ड्रिल्स लगे हुए थे। और क्या हो रहा था, एक तरफ मशीन अभी आपने देखा होगा, वहीं से मेरा सॉइल कलेक्ट हो रहा था और वही सॉइल को फिर हम लोग लैब टेस्टिंग में लेके जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन इज अवर वॉश बोरिंग। वॉश बोरिंग क्या होता है? वॉश बोरिंग इज ए फास्ट एंड सिंपल मेथड फॉर एडवांसिंग होल्स इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। ये भी क्या करता है, जमीन के अंदर से होल करके सॉइल को निकालता है और बहुत ही फास्ट होता है, बहुत जल्दी मेथड हो जाता है। ये भी मैनुअली ऑपरेटेड